make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @cookrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Hi guys, I'm again at the Leela Ambience Convention Hotel today. This property is located in East Delhi. मैंने इस होटल में काफ़ी सारी वीडियोस शूट की हुई हैं एंड आई लिंक देम ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई एम अ बिट लेट इन अपलोडिंग दिस वीडियो. ये मैंने क्रिसमस से 2 वीक्स पहले शूट किया था. इस टाइम तक इन्होंने क्रिसमस डेकोरेशन स्टार्ट कर दिए थे. जस्ट लुक एट दैट गॉर्जियस क्रिसमस ट्री. अगर आपको प्रॉपर क्रिसमस डेकोरेशन वाला वीडियो देखना है देन यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई. Hi guys, welcome back to my channel. Today I am at the Leela Ambience Convention Hotel for breakfast buffet and I'll be dining at the cafe Knosh. मैंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारी वीडियो बना चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बुफे की कि मेन्यू लिटरली सेम है बिकॉज हम काफ़ी जल्दी आ जाते हैं तो इन्हें मेन्यू चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला. तो या गाइज आई विल नॉट बी डूइंग दिस एज अ डिटेल्ड व्लॉग. बस मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा दूँगी कि मेरी मॉर्निंग कैसी रही और हमने क्या क्या खाया एंड हाउ इज़ द प्लेस. अगर आपको डिटेल्ड व्लॉग देखना है यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई. सो या गाइस, अभी खाने के लिए मैं ये सब लेकर आई हूँ. हेयर द पाव भाजी, वर्मिसेली उपमा, इडली. दीज आर लिटरली द सेम थिंग्स जो मैंने लास्ट वाली ट्राई की थी एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई. तो मैं ये खाना फिनिश करके अपने लिए बेक्ड स्टफ़ लेकर आऊँगी. Since I am not doing the detailed taste review video today, I have decided मैं खाली अपना favorite food ही लाऊंगी. And from the bakery section I have got these things: pain और chocolat, hard roll and butter croissant. All of these things are eggless. वहाँ पे पूरा bakery section eggless है. That is so cool. तो मैं इसे पे करूँगी कैपेचिनो कॉफ़ी से. And yeah, it's time to dig in. I'll see you soon with something different. यहाँ पे ना पराठा के लिए लाइव काउंटर है और आप गर्मा गर्म पराठे ऑर्डर कर सकते हो. ऑप्शंस में पनीर का पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा एंड गोभी का पराठा विच इज़ माय फेवरेट. सो हेयर आई हैव ऑर्डर्ड द गोभी का पराठा. वैसे मैं प्रेफर करती कि ये एक ही पराठा लाते बट ये 2 ले आए, बट नेवर माइंड. और इस बार इन्होंने इसके साथ अचार या दही नहीं दिया है. अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हो अलग से, ये ला देंगे. कितना मोटा सा और बहुत गर्म है. जस्ट लुक एट दैट फिलिंग. इस पराठे को मैंने पहले रिव्यू कर रखा है तो इसका भी डिटेल रिव्यू मैं नहीं दूंगी. बट ऑल आई कैन से इज़ दिस पराठा इज़ माई फेवरेट. और यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो गर्मा गर्म पराठे. I
यहाँ पे डोसा और उत्पम के लिए लाइव काउंटर है और मैंने ऑर्डर किया है प्लेन डोसा विद अ ट्विस्ट। एक्चुअली ये मेरा ही आइडिया था। बेसिकली मैंने इन्हें बोला कि प्लेन डोसा बना दे और उसके अंदर पोड़ी मसाला लगा दे। सो हेयर इज़ माई डोसा और डोसा वॉट एवर यू कॉल इट। कितना यमी लग रहा है, प्लेन, क्रिस्पी एंड स्पाइसी। वहाँ पे मैसूर मसाला डोसा का भी ऑप्शन है। उसमें क्या होता है, बेसिकली सेम डोसा होता है जैसे मैंने मंगाया, मगर इसके अंदर आलू की स्टफिंग भी होती है और ये सांभर के साथ मिलता है। मैंने मना कर दिया था सांभर के लिए बिकॉज मेरा मन नहीं था। सो या गाइस, नाउ आई एम गोना एंजॉय माय डोसा। वैसे तो मैं बेकरी सेक्शन से चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ, मगर फिर मेरा मन किया रास्पबेरी मफ़िन खाने का। वहीं पे ही रखा हुआ था एंड हियर इट इज़। कितना यमी दिख रहा है ना। एंड आई टोटली लव दैट मार्बल इफेक्ट ऑन द मफ़िन। और यहाँ से तो ऊज आउट कर दिए रास्पबेरी। जस्ट लुक एट दिस होल। थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है ये, सो आई विल हैव इट विद अ स्पून। This is so soft, super moist. इस बारी वॉफल का लाइव काउंटर नहीं है यहाँ पे, ऑलरेडी बने हुए रखे थे बफे काउंटर में और उसमें एक था तो मैंने लिया नहीं वो। आई एम गोना ट्राई दिस रास्पबेरी मफिन नाउ। अच्छा है, मगर मेरा फेवरेट अभी बटर खजो है। If you want to eat something simple for the breakfast, then you can opt for breakfast cereals or salad. They always have the detox water at this place, whether it's the breakfast, lunch or dinner. डिटॉक्स वाटर इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। ये हर बारी अलग डिटॉक्स वाटर का ऑप्शन रखते हैं। आज वाला इन्होंने ऑरेंजेस के साथ बनाया है एंड आई रिमेम्बर लास्ट टाइम यहाँ पे कुकुम्बर एंड मिंट का था। वैसे तो डिटॉक्स वाटर खाने से पहले लेना ठीक रहता है, बट यहाँ का खाना इतना डिलीशियस होता है और इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि मैं तो आते ही खाना खाने लगती हूँ और फिर डिटॉक्स वाटर का नंबर लास्ट हो जाता है। I met this cutie at the drop-off area of this hotel. Comment down below if you are a dog person or a cat person. A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys, subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me in creating more such videos.